जब भी वह कोई कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो वह अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के साथ में ओवरऑल उनका भी ध्यान रखे। इन सभी बातों के साथ हमें यह बात भी ध्यान देनी चाहिए कि पैकेजिंग मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल एक ऐसी चीज है जो टाइम पर शॉर्टेज हो जाती है। ऐसे टाइम में हमें परेशान होने की बजाय किसी सप्लायर के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए जिससे टाइम आने पर वो हमें इजीली मटेरियल प्रोवाइड कर सके एंड हमारे पैकेजिंग के प्रोडक्शन में होने वाले डिले की प्रॉब्लम को दूर कर सके। एक सही पैकेजिंग चूज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक प्रोडक्ट चूज करना है हमारे बिजनेस के लिए। और कई बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए पैकेजिंग करते समय, जैसे कि हम कहाँ पर और कितनी क्वांटिटी में अपना प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं। तो आप आइए स्मार्ट पैकेजिंग सिस्टम में हम आपकी हेल्प करेंगे आपके प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाने में, और हम आपको यह गाइड करेंगे कि पैकेजिंग मटेरियल कैसा हो। Thank you so much everyone.